All right, hello everyone. So let's discuss how we can trade for the Nifty and Bank Nifty in the coming days. First of all, Manu sir will not be able to make a video, so I'm going to take over today. So let's start with Nifty today since this was a Nifty expiry and we had a quite a dramatic day on this expiry because अगर आप देखेंगे morning से लेकर के तो every 5 minutes there was an extreme spike in options on both sides. यहाँ पे आपने देखा होगा morning में 9:45 के आसपास से sharp spike आया था दोनों साइड में where puts double tripled also immediately calls also double triple and this actually continued the entire day. So it was a very weird day as per the price action plus option behavior also, but eventually we saw a major breakout here and then end of the day make sort of no pullback rally kind of scenario हमें देखने के लिए मिला. We actually ended up missing out on this rally since it was after 2:30 p.m. and we actually did not expect this, but yeah, we rarely miss out on a trending days, so it's a little bit of mistake on our part as well. Okay, so what's done is done. Let's move forward and let's see how we can trade for the tomorrow's बैंक निफ्टी एक्सपायरी. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट डायरेक्टली. ओके, सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें बन रही है. अगर हम डेली चार्ट्स को देखेंगे तो बैंक निफ्टी हैज़ बीन इन अ वेरी स्लोइश अप ट्रेंड. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इनसाइड बार्स बने, उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स यहाँ से इसने बहुत वियर्ड कैंडल्स बनाए. बाय द वे दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स टू ट्रेड इन इंट्राडे, बट या इंट्राडे में अगर हम देखेंगे आज तो इसने क्वाइट गुड कंप्रेशन बना दिया है यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने में मिला and then end of the day close was really strong. Now ऐसे केसेस में there is generally one concern is that कि कभी जब भी ऐसे rising channels के बेसिस पे मार्केट जब भी ऊपर जाता है obviously we had seen a fall in bank nifty then what we saw यहाँ से लेकर के इसने एक बेस बना दिया, बट यहाँ से लेकर ये ऊपर जो जा रहा है यहाँ पे इसमें कोई मोमेंटम नहीं है. ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हुआ है बट इसमें कोई मोमेंटम नहीं है. सो इट्स गोइंग वेरी स्लोइश काइंड ऑफ ट्रेंड हियर एंड देन उसके बाद में यहाँ से ये हायर राइज बनाते जा रहे हैं. ऑल्सो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक राइजिंग चैनल बनाया हुआ है. यहाँ से इट इज़ नॉट रियली इनिशिएटिंग मोमेंटम ऑन द ईदर साइड. सो ऐसे सिनारियोज में बेसिकली इंट्राडे में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट यस ओवरऑल जो सिनारियो बनता है इसमें कि जो रेंजेस बनेंगे वट एवर रेंज गेट फॉर्म आई थिंक उसका ब्रेकआउट ट्रेड करना बिकम्स प्रायोरिटी फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज एवरी टाइम वी सी दैट कि जब भी रेंज ब्रेकआउट हुआ है बैंक निफ्टी में इट हैज नॉट रियली गिवन अ फॉलो. यहाँ पे भी आप देखेंगे वेन एवर द ब्रेकआउट हैज हैपेंड यहाँ से लेकर के ब्रेकआउट जो हुआ द ब्रेकआउट डिड नॉट इनिशिएट अ फॉलो. यहाँ से भी एक ब्रेकआउट जो हुआ इसने भी फॉलो नहीं दिया. इट प्रॉपरली केम डाउन फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग एंड एवरीथिंग. यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ, डिड नॉट गिव फॉलो. फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फॉलो हमें देखने के लिए नहीं मिला. इवन लास्ट मतलब येस्टरडे का जो भी ब्रेकआउट आया था इसका भी फॉलो अप देखने के लिए नहीं मिला. एंड इवेंचुअली वी आर सीइंग दैट कि आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है. नाउ इसके ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है. दैट्स नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. नाउ व्हाट चेंजेस गोइंग फॉरवर्ड इज दैट कि अगर इस फॉलोअप के बाद में अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इट डज नॉट इनिशिएट और जैसे डज नॉट निगेट टुडेज राइज, मतलब आज का राइज अगर निगेट नहीं होता है दिस विल मार्क अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली इन दिस केस. सो अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है व्हाट शुड बी डन फॉर टुमारोज बैंक निफ्टी एक्सपायरी. if bank nifty opens up in this area and it actually sustains above this 51,550 then it creates a possibility that कि यहाँ से थोड़ा compression करके we can see yesterday's rise इसका follow हमें देखने के लिए मिल सकता है, in which case we can easily trade this move from here to higher levels from here. Okay, so इसका basically target अगर find out करना है तो we'll have to mark the previous resistances here. बेसिकली जो प्रॉपर जो लेवल्स रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ आइडिया कि कहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ओके, so the levels come around 51,877. These are spot levels by the way, and eventually the objective of this move could be to test this 52,340. Obviously यहाँ तक जाते जाते it would be making many multiple stop loss hunting attempts in between and we'll have to find proper entries in there. Okay, so I hope आपको ये basic idea पता समझ में आ गया होगा. Now going forward if this does not sustain that means कि अगर कल का open flat होता है या फिर gap down होता है या फिर इसी रेंज में कहीं पे चलता है and it breaks below this 51,550 and then इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है देन इस केस में दिस आज का जो भी अप मूव हुआ है इसे एक बुल ट्रैप माना जाएगा. एंड आफ्टर दैट जब तक इसके नीचे सस्टेन करता है इसका ऑब्जेक्टिव इवेंचुअली बन जाएगा टू टेक आउट दिस लो एंड इवेंचुअली आज का जो भी डील हो है उसका ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. ओके, सो अगर इस अप ट्रेंड को निगेट होना है तो आई थिंक सो देयर शुड बी टू पॉसिबिलिटीज कि पहला तो ये कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिले, उसके बाद में अगर पुल बैक के बाद में फिर से अगर डाउनसाइड की तरफ इनिशिएशन अगर करता है विच इज़ अगर सेलिंग फॉलोअप अगर यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है देन इट बिकम्स अ केस दैट कि शायद से
थोड़ा बहुत करेक्शन इसके बाद में आ सकता है. रिमेंबर, सेलिंग फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड फॉर कंफर्मेशन इन सच फेजेस. ओके, सो फर्स्ट थिंग, बेसिकली यहाँ से ये जो भी फॉल है, इन केस में सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट, अगर कोई फॉल आता है उसके बाद में उसका फॉलोअप देखने के लिए मिलता है, देन ओनली दैट विल बी द कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग जो अपकमिंग करेक्शन इनिशिएट कर सकता है. अदरवाइज अगर ये पे सस्टेन होके इफ यू गेट टू सी दैट कि ये फिर से ऊपर जा रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि बैंक निफ्टी भी ईटीएच हिट कर सकता है. ओके, सो दिस इज ओवरऑल थिंग अबाउट बैंक निफ्टी. नाउ the third thing which we generally do not consider in we always expect मतलब most of the times we expect a momentum, मतलब बड़ा expect करते हैं, but we generally most of us we generally don't talk about if sideways गया तो कैसे इसे follow करना चाहिए. So basically I will just keep one thing in mind. If we get to see open around here and it does not break either sides, it's best to wait for either side breakout. अगर morning में open ऐसा अगर होता है एंड यहाँ पे दोनों साइड में अगर कंप्रेशन कराता है, देर इज नॉट रियली ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड, देन इट्स बेस्ट केस कि यहाँ से एक ब्रेकआउट का वेट किया जाए, उसके बाद उस ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन द रेंज इटसेल्फ हियर. ओके, सेम गोज फॉर द ब्रेकडाउन ऑल्सो. अगर इसके नीचे यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हो गया, सस्टेन हो गया, तो ही एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, अदरवाइज वी माइट स्टे इन द रेंज. सो बेसिकली ये जो बीच का रेंज है 51,550 से लेकर के 750, दिस कुड बी अ ट्रैपिंग जोन फॉर टुमारो एंड प्राइस बिहेवियर मैटर्स द मोस्ट इन दिस फेज. ओके, तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा. नाउ आज एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देर वाज नो मोमेंटम एट ऑल. छोटा सा एक अप मूव आया था एंड देर इज़ अ वेरी डिफरेंस, मतलब बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. स्पॉट में आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, फ्यूचर्स में कुछ अलग ही है. सो दैट मार्क्स अ लिटिल बिट ऑफ वियर्डनेस दैट इज करंटली गोइंग ऑन इनटू द मार्केट्स. बट ओवरऑल एक सिनारियो यहाँ पे ये बन जाता है कि आज का जो फिन निफ्टी का मूव था, दैट कुड बी मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी. बिकॉज अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे, फिन निफ्टी हैज़ गिवन अ राइज ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 1.5%, विच इज सिग्निफिकेंट. बट निफ्टी में यहाँ पे एक्चुअली सेल ऑफ दिखा है इंस्टेड ऑफ गोइंग हायर. दिस वॉज मोस्टली डन बाय बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिंसर और ओवरऑल द फाइनेंस सेक्टर. बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो जो राइज हुआ है, दैट इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट एज मच. इट वाज ओनली basically I would say derived by the finance sector. That is why we saw this could be easily just the expiry control move. So we'll have to see क्या इस move का कल अगर follow पाता है, then only we can consider this move as a valid one. Okay, I hope you're getting the point. नाउ निफ्टी के केस में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वी आर सीइंग करंटली द थर्ड स्ट्रेट साइडवेज डे इन दिस रेंज इटसेल्फ. अगर आप देखेंगे तो जब से सितंबर एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम फ्राइडे 30th ऑफ अगस्त, वी आर सीइंग दैट कि ये कंटिन्यूस इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं. वी आर सीइंग अ प्रॉपर कंसोलिडेशन हियर. सो इसे ट्रेड करना जनरली आफ्टर कंसोलिडेशन बिकम्स ईजियर. एंड करंटली अगर मैं रैंक करूँ फ्रॉम बुलिश टू बेरिश इंडेक्स, तो करंटली निफ्टी कुड बी ए बेरिश इंडेक्स टू ट्रेड. अगर शॉर्ट ट्रेड इसमें अगर अच्छा खासा कल बना तो इसे ट्रेड किया जा सकता है. बट इट्स बेस्ट दैट कि हम इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करें विच हैज़ बीन द प्रीवियस 2 days लो. मतलब मंडे का भी ये लो सेम था, प्लस ट्यूजडे का आज का लो भी ये सेम था, दैट इज 25,235. अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है and it sustains below that, then there is a possibility that only in that case we can see a downside move from here, which can target the first objective here, that would be the gap fill, that is 25,156, and eventually it could target the Thursday's low. But remember, it has to sustain below this 2 days low, that is 25 to 35. उसके बाद में हमें ये मूव देखने के लिए मिल सकता है. Otherwise we can just make a bear trap here and वहाँ से ये पलट सकता है. If in case it takes support here again and bounces back, then eventually previous 2 days highs would be targeted. The targets for this move could be today's high, that is 25,320, and eventually the open high of Monday. I think yeah, Monday, right? So open high of Monday could be targeted. So it all depends upon how Nifty opens up and does it sustain above this 25,235 level or not. Now एक और इसमें एक चीज़ आती है कि निफ्टी के केस में वी आर नॉट रियली सीइंग अ फॉलो अप ऑन द सेलिंग ऑफ ईदर, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है. सो इन दिस केसेस व्हाट हैपेंस दैट कि इफ वी कंसिडर दिस मूव एज अ सेलिंग लेग एंड इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, इफ इट सस्टेन्स बिलो दैट, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेलिंग फॉलो. मतलब अगर आप टॉप से हम देखेंगे तो इट हैज़ क्रिएटेड अ मूव ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स, एंड इसका अगर फॉलो अप आ गया नीचे की तरफ एंड सस्टेन्स, बेसिकली इसका बेस्ट जो सपोर्ट जोन है वो 25,156 के आसपास में, विच इज़ द गैप अप ऑफ द सितंबर एक्सपायरी.
बट यहाँ से ही अगर ये ब्रेकडाउन अगर करता है तो मेजर करेक्शन कुड बी एक्सपेक्टेड. मेजर मतलब ऑब्वियसली there are multiple supports level and all that. I'm just discussing a shorter time frame here. But yes, अगर गैप फिल जोन से अगर ये पलटता है then there is a possibility that कि यहाँ से बाउंस आ सकता है. But the proper sign of weakness would be that कि अगर ये 25,156 के नीचे अगर होल्ड कर गया, the basis of this entire last 3 to 4 days move has been this gap. Now if this gap gets broken down on the on the downside, then there is a possibility that we might be in for a weakness. So दो चीजें हैं. If we get to see this breakdown, we can easily get to see target of this, and most of the things will be dependent on this level, that is 25,000. मोटा मोटी एक 25-30 पॉइंट का लेवल एक अज्यूम कर सकते हैं अपन, 25,140 से लेकर के 160-170 तक. दिस इज अ गैप जोन. सो यहाँ से प्राइस बिहेवियर क्या आता है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर निफ्टी टुमारो. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. Now, mostly we'll be focused on Bank Nifty expiry tomorrow, so I hope Bank Nifty का भी आपको आइडिया आ गया होगा. So basically Bank Nifty में 51,750 and 51,550 could be नो ट्रेड जोन. इस लेवल्स के ऊपर ही काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी. एंड अगर आज का राइज एंड ऑफ द डे में जो राइज आया है, इफ दिस इज एन एक्चुअल वन, इफ दिस सस्टेन्स, देन इट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें और हायर लेवल्स आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं. And the opposite of that, if we get to see a bull trap of this and we get to see a breakdown here. Okay, so I hope आपको idea आ गया होगा what I'm trying to say. And that's it for the time being. I hope you are trading responsibly, and whenever the next day forms will be whenever the next trending day forms, will be sure to catch it. We rarely miss out on trending days, so it was just one of those days. Okay, so that's it for the time being, and trade responsibility. Thank you.